We all know that Father's Day is around the corner, and every kid has a dream to make their father smile. How to bring that? So, the best thing in this world is to cook something very, very special, interesting, healthy, nutritious, and very, very tasty. Because it's a myth saying that healthy food tasty नहीं हो सकता. चलिए कुछ ऐसा बनाते हैं जो हमारे फादर्स के चेहरे पे वो मुस्कान क्रिएट करेगा और वो बोलेंगे, वाह बच्चे क्या बनाया है तुमने. दोस्तों, आज हम हेल्दी ट्विस्ट के साथ दो डिशेस बनाने जा रहे हैं. पहला है कीनोआ बिरयानी और दूसरा है क्रैनबेरी कोकोनट खीर. सबसे पहले पैन को गरम करना है. के बाद लेंगे घी, ये मिर्ची डालेंगे, प्याज को हमें अच्छी तरह भूनना है. 1 चम्मच जीरा यानी क्यूमिन सीड, 2 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट. I can see that the rawness is already gone. Time to add tomatoes. Fresh tomato, 4 teaspoon of fresh tomato, जो मैंने रफली काटा हुआ है. I'm gonna add कटहल का कीमा. This is the twist in this recipe that I'm using keema of कटहल. So almost 6 teaspoon of jackfruit keema और कटहल कीमा. Kathal is very much in season right now, and I believe that we should eat seasonal ingredients. जो seasonal चीज़ें होती हैं वो बहुत healthy होती है, because I know जो fit है वही hit है. Now time to add spices. 2 teaspoon of chili powder, coriander powder, cumin powder, garam masala, 1 teaspoon of turmeric powder. Time to add some yogurt or dahi, 6 teaspoon of yogurt. Time to add some salt or seasoning, but of course keep low in salt because more salt is not very healthy. I'm gonna use these beautiful vegetables. The nutritional content of the vegetables or the fiber content of the vegetables should always remain. You should never overcook the vegetables. These are so nice, lush and green. Keep them just like that. So that's exactly why I am cooking it in the last. Basically onion slices which are fried, brown onion. So यहाँ पर मैंने राइस के बजाय कीनोआ यूज़ किया है. और कीनोआ कैसे आपको यूज़ करना है, आप इसको पहले सोक करेंगे पानी में, ठंडे पानी में आप इसको सोक करके और उसके बाद कुक करेंगे. फ्रेश मिंट, गुलाब जल, रोज़ वाटर और गुलाब जल. एंड देयर इज अनदर ट्विस्ट टू दिस रेसिपीज. नॉर्मली कटहल बिरयानी में लोग चंक्स डालते हैं कटहल के, जो बहुत फाइबरस होता है. सो यहाँ पर मैंने कटहल को कोफ्ते के फॉर्म में बना दिया है. सो आई एम जस्ट गोना पुट दिस कोफ्ताज इनसाइड. There should be fruity content whenever you are cooking, be it any kind of fruit. आप ज़रूर यूज़ करें अपने खाने में. तो मैंने यहाँ पर क्रैनबेरी चूज़ किया है. सो क्रैनबेरी विल गिव लॉट ऑफ टैंजीनेस इन दिस रेसिपी. जब आप खाओगे तो इट विल ऑल कम आउट वेरी वेरी नाइस. सी दिस इज़ ऑलरेडी लुकिंग एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, sumptuous, nutritious, healthy and colorful. Time to put it on a dum. So I am having some bit of foil. I'm just gonna cover this with foil. Let this get cooked for around 5 minutes. So now it's more than 10 minutes and I'm just gonna open it. Wow. So the super nutritious and very very healthy कीनोआ बिरयानी तैयार हो चुका है. और अब मीठे के बगैर तो कोई मील इनकम्प्लीट होता नहीं है. तो कुछ मीठा हो जाए. आज बना लेते हैं क्रैनबेरी खीर और इसमें हम कोकोनट मिल्क का यूज़ करेंगे. तो चलिए बनाते हैं इस चीज़ को. सबसे पहले लेंगे कोकोनट मिल्क.
2 चम्मच चीनी। कुक करेंगे तब तक शुगर अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए कोकोनट मिल्क के साथ। सो आई कैन सी ऑलरेडी coconut milk is boiling. Time to add boiled quinoa. Ratio is that if you have 100 gram of quinoa, then you should take about a liter of coconut milk. It's a very quick recipe. Won't take any time to cook, and this will be really nice. At this time only, I'm gonna add cranberries. Once it cooks with the coconut milk and quinoa, it will also become nice and fluffy. Now I'm gonna add saffron. Whenever you are using saffron, please ensure that आप इसको दूध में soak कर लें। डायरेक्ट saffron को नहीं डालना चाहिए किसी भी डिश में, अदरवाइज उसका फुल जस्टिफिकेशन या उसका फुल फ्लेवर नहीं मिलेगा। I want my kheer to be nice and thick, so that's the reason I'm cooking it for longer period of time, just for that touch of spice. No spice, no life. Let's make it more nutty. Some pista powder, almond flakes. Wow, what else you want in life? I know my dad would be super happy to eat this. Wow, this is nice and thick, and I have picked up this beautiful sakure, like earthenware pot, and this will also give lot of flavor to the kheer.